Welcome all the participants and viewers who are with us for today's Uttamottama Seva. The Uttamottama Seva is a grand ritual that is described the Kamikagama by Paramashiva himself. He reveals it is the best of the best way to connect him to the Kriya Pada, which is the rituals. The Shaivagamas are divided in four parts: Kriya Pada, Yoga Pada, and Jnana Pada. Paramashiva describes the Kriya Pada as the methodology to connect, to experience oneness with Paramashiva, the actions through which we can experience Paramashiva. In the Uttamottama Seva, we'll be having various offerings such as the Abishekam, the Archana, and the Deeparadhana. We'll be offering various upacharas such as the chanting of the Veda mantras, the stotras. We'll be offering the choicest of the mantras from the Vedas, Agamas, the Dravida Vedam, and many more offerings. Let us now begin with the Sadguru Vandanam, invoking the presence of our beloved Bhagavan, the supreme point of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Parameshwaram. Before we begin the Uttamottama Seva today, we request all the participants who are with us to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to this, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, is the Chinmaya Vigraha, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth that whatever I offer to Swamiji during the Uttamottama Seva will reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now begin with the Uttamottama Seva. Please be seated in the space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha. As we begin with the Sadguru Vandanam. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्तिमध्यमाम् नित्यानन्दपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ललाटे त्रिपुण्ड्रे निटलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि भनिराजं शशिकलाम् प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरिजोगी विजयते. Yes. Now we will begin with the Tattvachamanam. Achamya. We can witness Acharya performing the Tattvachamanam. Paramashiva describes beautifully about the 36 Tattvas within the Shaivagamas. He reveals that the whole cosmos is made of the 36 Tattvas, but also even each of our individual self also is made of these 36 Tattvas. Through the Tattvachamanam, we cleanse, we purify these tattvas within us, these principles within us, and invoke the presence of Paramashiva within us to start the ritual. Next is the Shuklambaradharam. We'll be praying to Mahaganapati, known as Vigneshwara, the Lord of all the obstacles. Where Mahaganapati stands, obstacles give way. Now let us pray to Mahaganapati for removing all the obstacles from offering this ritual at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan, the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannapadanam Dhyayet Sarvavighnopashantayet. Next is the pranayama.
prananayam ja. The process of pranayama is done with the Samhita mantras. The process of pranayama is such that we inhale, hold our breath, and exhale as we chant the Samhita mantras. What are the Samhita mantras? Samhita mantras are the very sound form of Paramashiva. We energize our pranic layer and experience oneness with Paramashiva as we perform the pranayama. Next, we'll perform the Sankalpa, creating a conscious resolution. Now, I request all the participants to be seated with your head, neck, and spine in a straight line. Create a deep, a strong visualization of the reality that you want to manifest by offering this ritual of the Uttamottama Seva. By the end of the Sankalpa, offer the visualization, drop it at Swamiji's feet as a deep prayer out of the gratitude of all the experience Swamiji has given us. Having gratitude for being in our life, being a part of our life. Now, clasp your hands and place them on your right thigh as we enter into the Sankalpa. Om Mamopata Samasta Duridakshayadvara Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Pretyartham Shri Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Pretyartham Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanah Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshatitame नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां स्वातीनक्षत्र हर्षणयोग भवकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासौ जातस्य अरुण शिवाजी नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य पुण्णुदुरै शिवाजी नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासौ जातायाः निर्मला शिवाजी नाम्याः सकुटुम्बस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य रेखा पाठक नाम्याः मोहन पाठक नामधेयस्य नरहरि पाठक नामधेयस्य चार्ल्स ब्रोक्नर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च श्री कैलासोन्नत द्वादशान्तश्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीजमान छत्र चामर श्रीजिन्नगाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राणजीमूत परमत कलभकेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षण नरहारह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान
कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्ताभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्री भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव उत्तमोत्तम पक्ष उपचार युक्त पूजां करिष्ये। ओम अप उपस्पृश्य will perform the Sakalikaranam, which is a very special nyasa that is performed by the Acharya to invoke the presence of Paramashiva within his body. Sakalikritya. Let us now begin with the Abhishekam, offering of the sacred bath. Now, we request all the participants to be seated in a receptive space and witness this Abhishekam offered to our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Om Namo Bhagavate Rudraya. ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदयिषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामुदते नमः या दैजस्यवतमा शिवं बभोवते तनुः दिवासरव्या यादवतया नो रुद्रं नडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुपाशन्तमया गिरिजन्ताभिजागजे यामिजुं गिरिजन्तहस्ते विवर्षस्तवे गुरुमाहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिजाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत् यक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य भोजतति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक् ऐकश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः ताम्रो अरुणभुतपप्रस्सु मङ्गलः ये जैवागुं रुद्र अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रजो वैशागुं हेडईमहे असंयोपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः
उतैनं गोपा अतृषन्नतहार्यः विश्वाभूतानि सदृष्टा मृडयातिनः नमस्तैलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्वमुभयोरार्तिजोर्ज्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं तनुःकपर्दिनो विचल्यो बाणभागुमुत अनेजन्नस्ये च महाभुरस्य निचङ्गतिः या ते एतर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते तनुः तयास्मान् विश्वतस्मम यक्ष्मया परिभुजा धायानातताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक्तु विश्वतः अथो यैषधिस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिजीमदेवधीनां पतये नमो नमो बब्लुजाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथापि नेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय ग्रन्थयते बद्धीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नानायनि व्याधिना व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निचङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निचङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निजैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाभिभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमः सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः
य च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो मेढुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आजवे चाधिराय च नम शीघ्र्याय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो च कन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चासुरधाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च अथ धूपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेदं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः धूपमाग्रापयामि अथ दीपः ॐ सात्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि निवेदनानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि You all, let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham.
Sachidanandam, we will now be moving to the Archana, offering our respects to the various gunas, the Sakala Aishwaryas, the various qualities of Mahaganapati. Today, we are going to be worshipping the Supreme Point of Hinduism in the form of Ganesha, the one who removes all the obstacles in our life. So now we'll be chanting the Archana and then offering the various names of Ganesha at Ganesha's lotus feet. So let us now enter the Archana. Om Gajananam Chandrasamanavarnam Swadantapashankushaladukani Hastairdadanam Kamalasanastam Vigneshwaram Naumi Sada Prasannam. Om Gajananaya Namaha. Om Ganadhyakshaya Namaha. Om Vignarajaya Namaha. Om Vinayakaya Namaha. Om Devamaturaya Namaha. Om Dvimukaya Namaha. Om Pramukhaya Namaha. Om Sumukhaya Namaha. Om Kartrine Namaha. Om Supradipaya Namaha. Om Sukhanidhaye Namaha. Om Suradhyakshaya Namaha. Om Surarighnaya Namaha. Om Mahaganapataye Namaha. Om Manyaya Namaha. Om Mahakalaya Namaha. Om Mahabalaya Namaha. Om Herambhaya Namaha. Om Lambajataraya Namaha. Om Hrasvagrivaya Namaha. Om Mahodaraya Namaha. Om Mahotkataya Namaha. Om Mahaviraya Namaha. Om Mantrine Namaha. Om Mangalaswaraya Namaha. Om Pramadhaya Namaha. Om Prathamaya Namaha. Om Prajnaya Namaha. Om Vignakartre Namaha. Om Vignahantre Namaha. Om Vishwanetre Namaha. Om Viratpataye Namaha. Om Shripataye Namaha. Om Vakpataye Namaha. Om Shringarine Namaha. Om Asritavatsalaya Namaha. Om Shivapriyaya Namaha. Om Shankara Singharakarine Namaha. Om Shashvataya Namaha. Om Balalaya Namaha. Om Balotithaya Namaha. Om Bhavatmajaya Namaha. Om Purana Purushaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Pushkarotsiptavyarine Namaha. Om Agraganyaya Namaha. Om Agrapujyaya Namaha. Om Agragamine Namaha. Om Mantrakrite Namaha. Om Chamikaraprabhaya Namaha. Om Sarvaya Namaha. Om Sarvopashyaya Namaha. Om Sarvakartre Namaha. Om Sarvanetre Namaha. Om Sarvasiddhipradaya Namaha. Om Sarvasiddhaye Namaha. Om Panchahastaya Namaha. Om Parvati Nandanaya Namaha. Om Prabhave Namaha. Om Kumara Gurave Namaha.
ॐ अक्षोभ्याय नमः ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॐ प्रमोदाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ कान्तिमते नमः ॐ धृतिमते नमः ॐ कामिने नमः ॐ कपित्थबलप्रियाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ ब्रह्मविद्यादिदानभुवे नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमः ॐ भक्तजीविताय नमः ॐ चितमन्मथाय नमः ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः ॐ जायसे नमः ॐ यक्षकिन्नरसेविताय नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ गणाधीशाय नमः ॐ गम्भीराय नमः ॐ गम्भीरनिनदाय नमः ॐ वटवे नमः ॐ अभीष्टवरदायिने नमः ॐ ज्योतिषे नमः ॐ भक्तनिधये नमः ॐ भावगम्याय नमः ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ अप्रकृतपराक्रमाय नमः ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॐ सुखाय नमः ॐ सरशम्भुनिधये नमः ॐ महेशाय नमः ॐ दिव्यागाय नमः ॐ मणिकिङ्किणीमेखलाय नमः ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ सतोत्थिताय नमः ॐ विघातकारिणे नमः ॐ विश्वदृशे नमः ॐ विश्वक्षत्रे नमः ॐ कल्याणगुरवे नमः ॐ उन्मत्तवेषाय नमः ॐ अपराजिते नमः ॐ समस्तजगदाधारिणे नमः ॐ सर्वेष्वस्यापराधाय नमः ॐ आक्रान्तचित्तप्रभावे नमः ॐ श्रीविघ्नेश्वराय नमः अथ धूपः all
उपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः श्री महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ मधुपातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्रमुदोषधि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि Next, we'll be offering various upacharas, starting with the Chaturvedam. The Chaturvedas are the source scriptures of the Sanatana Hindu Dharma. Vedas are the pure signs that were revealed by Paramashiva in his formless state in the Avyakta Bhava to the Rishis. Henceforth, the Vedas are called as Apaurusheya. Let us offer the Chaturvedam at the divine lotus feet of the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Brahmanda Nayaka Shri Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Chaturbhava Chaturveda Priya Chaturvedam Avadharaya Harihi Om Agnimeele Purohitam Yajnasya Devam Ritwijam Hotaram Ratnadhatamam Harihi Om Harihi Om Ishetvorjetva Vayavastho Payavastha Devo Vassavita Prarpayato Shreshtatamaya Karmane Harihi Om Harihi Om Agna ayahi vitaye granano havyadataye nihota satsi barhishi Harihi Om Harihi Om Shanno Devi Rabhishtaya Apo Bhavantu Vitaye Shanyo Rabhisravantu Naha Harihi Om. Next is the offering of the Samagana.
The next is the offering of the Agama Shlokas, the verses from the Shaivagamas. The Agamas are the practical science and the way to apply the truth of the Vedas into our very lifestyle, revealed by Paramashiva himself to Devi Paramashiva Shakti. The definition of Agama is Agatam Shivavaktrebhyo Gatam cha Girijamukhe Matam hi Vasudevasya Tasmat Agama Uchyate. Meaning, that which is revealed by Paramashiva, received by Devi Paramashiva Shakti, and adopted as the constitution to run the cosmos by Bhagavan Mahavishnu is called as the Agama. Let us now offer the Agama Shlokas at the feet of our beloved Bhagavan. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव आगम श्लोक प्रिय आगम श्लोकान् अवधारय कैलास दक्षिणे शृंगे नानाश्चर्य समन्विते प्रवृद्ध वटवृक्षोत्थ छायाच्छन्नेति विस्तृते व्याघ्रचर्म परिधाने पीठे रत्नोपशोभिते देवदानव गन्धर्व सिद्धविद्याधराधिभिः सेव्यमानं महादेवं श्रीकण्ठं विश्वनायकम्. Next is the offering of the Samagana. Paramashiva is known as Samagana Priya, the one who is easily pleased by listening to the Samagana. The Samagana is the way the Vedic rishis who compiled the Vedas expressed their Shiva Bodha, expressed the experience of Paramashivoham. Let us offer the Samaveda, the Samagana at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव साम विजयी भव सामगान प्रिय सामगानमवधारय एतत् सामगायन्नास्ते हा भूहा भूहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृतहग्श्लोककृतहग्श्लोककृते अहमस्मि प्रथमजारुतास्याम् पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभागी यो मा ददाति स इदेवमा वाहा अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुवर्णज्योतिः हरिः ओम्. Next is the offering of the stotras. Stotras are compositions of Paramashiva Bhaktas who have composed glorifying Paramashiva, invoking, remembering his various unending auspicious qualities, praying for protection and blessing us with enlightenment, blessing us with everything, blessing us with success, wealth, health, prosperity, and ultimately bhakti towards Paramashiva. Let us offer the stotras at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव जय विजयी भव स्तोत्र प्रिय स्तोत्रमवधारय
दुःशकुणदुर्गतिदौर्मणस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः। ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्त्वविदुराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहराय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिप्रलयकालरौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकनिलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय वासुकितक्षककार्कोटकशङ्खकुलिकपद्ममहापद्मेति अष्टमहानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकललोकमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपद्रवाय निरवध्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरन्तकाय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय निरागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय नित्सुलाय निस्संशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वांग खड्गचर्म पाशाङ्कुशतमरशूलचापबाणकथाशक्तिभिर्निपाल तोमर मुसलमुद्गर पाशपरिगभुषुण्डी शतग्नि चक्रायुधायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकराळवदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युम् अपमृत्युभयं नाशय नाशय चोरभयम् उत्साडय उत्साडय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटय उच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठरेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्दि छिन्दि खट्वाङ्गेन विबोधय विबोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डमारीच वेताल ब्रह्म राक्षस शणानि सन्त्रासय सन्त्रासय अयं कुरु कुरु विस्तृतं माम् आश्वासय आश्वासय नरकभयं मां उद्धर क्षुत्रभ्यां माम् आप्यायय आप्यायय दुःखातुरं माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन माम् आच्छादय आच्छादय
मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते मुदाकारात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम् पुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरे तरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयाधिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगितामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्. Next we'll be offering the Dravida Vedams, that is the offering of the hymns from the Dravida Bhasha, which is the Tamil, which is composed by the Nalvars, namely Tirunavakar Sir, Manikyavasagar, Trijnana Sambandar and Sundaramurti Swamigal. Now let us offer the Dravida Vedam at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan, the supreme point of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव जय विजयी भव द्राविड वेद प्रिय द्राविड वेदमवधारया. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. சிவா திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய செவியன் விடையேறிவோர் தூவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளங்கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்திருந்த அருள் செய்த வீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனன்றே. சிவா திருச்சிற்றம்பலம்.
we are going to be offering at the divine lotus feet of our beloved Swamiji are the Sangeeta Seva, the Nritta Seva, and many more offerings which we have. But before we start, let us enjoy listening to the amazing, beautiful leelas of our beloved Swamiji himself. So today, we have a very interesting and exciting leela from the very life of Swamiji himself. It goes back to the time when Swamiji was just a very young boy. One incident happened in the life of the young avatar with his guru, Raghupati Yogi. Swamiji really loves his guru so much, and after Swamiji had mastered the art of levitation, Raghupati Yogi used to take Swamiji around the village to do small demonstrations of this power. Sometimes government school boys and other kids, other village kids, used to come to the temple, and Raghupati Yogi used to make Swamiji demonstrate this power to inspire them to also do yoga. As Swamiji says, in those days itself, the atheism movement had already started in that area. So, out of his extreme compassion, the living avatar himself descended to revive and inspire this generation to get back to its roots of Hinduism. So, let us now immerse ourselves in a devotional kirtan by Chinna Krishna Dasa on Paramashiva. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत श्री नित्यानंद परमशिव संगीत प्रिय संगीतमवधारय नित्यानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि समागमपदनिसा सानिदप मागरिसा सानिदप मगमगमपदनि सारिणि सदानि पदमागमापमापदनि सानिदप मगमगमपदनि साम्ब शिवाय नवे रजितागिरि शाम्भवी मनोहरा परात्परा कृपाकरा श्री साम्ब शिवाय नवे रजितागिरि
Sari sani ni sani da da ni da pa ma da ma ga sa ma ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni నీవే గురుదైవం వనియే వేలను సేవింపుచు సదా మదిని శివ సాంబ శివాయనవే రచితాగిరి సరి సని సా నిసని దని దని ద పద పమ ప స స స స మ మ మ మ ప ప ప ప ద ద ద ద ని స ని ద పద ప మ గ మ ప ద ని సా సా ని ద ప మ గ మ ప ద ని పరమదయా నిధియనుచు వరుమకునా హృదయమునా మహాదేవ మహాప్రభు సుందర నాయక సురవరదాయక భవ భయహర శివ సాంబ శివాయ నవే రచితాగిరి సని నిద ద ప ప మ గ గ మ పద ని ద మ గ మ పద ని స మ గ స సా సా సరి స స ని ని ద ని ద ప ద ప మ ప ప స స స స మ మ మ మ ప ప ప ప ద ద ద ద ని స ని ద ప మ గ మ ప ద ని సా సా ని ద ప మ గ మ ప ద ని శ్రీ शुभकर शशि मकुटधरा जय विजय त्रिपुरहर श्रितजन लोलाद्भुत गुणशीला कृतनुदपाला पतितुनिफेला ఉదంబుల రంగ పదాబ్జమునందు పదంబులు చేర్చు పశుపతిని ధ్యానము స్నానము పానము దానము మానము అభిమానమనుచు కనికరమున చరణం బులు కనుగొలు శృతులన్ నుతుల శరణనుచు సాంబ శివాయనవే రజితాగిరి సరి సాని దని సాని ద ప పద ని ద ప మా ప మా గ మా పద పద ని దని సరి సాని దని సాని ద మా పద ని సరి సారి కొని నమ మంత్రం కోరినన్ను నిపదాబ్జ యంత్రం దాసుడౌ చిన్ని కృష్ణునికి దిక్కుని వేయని చొక్కనాతుని నమ్ముకొని సాంబ శివాయనవే రజితాగిరి శాంభవి మనోహరా పరాత్పరా కృపాకరా శ్రీ సాంబ శివాయనవే రజితాగిరి శాంభవి మనోహరా పరాత్పరా కృపాకరా శ్రీ సాంబ శివాయనవే రజితాగిరి. This was a beautiful kirtan composed by Chinni Krishnadasa, and it is about Paramashiva himself, of how he is embodying how he is always ever compassionate towards his devotees and relieves them from pain and suffering. After this wonderful kirtan, let's continue with the leela from Swamiji's life. So after Swamiji did the demonstration of this amazing power of levitation, the other boys got jealous and started to ask, why are you only making him do the power? Raghupati Yogi replied that because he is initiated. To that, some of the boys asked, for what is initiation needed? We are all the same, but you are only giving it to him. Here, Swamiji so beautifully reveals, life is not equal. Everyone is unique, and so life is unique for each and every one of us. Then, Raghupati Yogi created a very beautiful scene. He called around 20 boys and made them stand and gave each one of them a 1 rupee coin.
He gave Swamiji also a coin. And he asked all of the 21 boys to start playing heads or tails. And all of the heads were to sit. So in the first round, around 21 kids, out of the 21 kids, 10 got out. Then, one by one, 11 started becoming less and less. Finally, only Swamiji stood. And Swamiji, along with one more boy, were left. Finally, our beloved avatar only was left standing. Even that one boy also got out. Raghupati Yogi so beautifully then said, if once he won, it is a probability. But twice, thrice, if he won, it's a possibility. But all the time, if he has to win, it is because of initiation. Each and every one of us are blessed with this very power of initiation in our own lives with the grace of the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us now celebrate our Guru through a very vibrant piece of dance to the song Pushpanjali. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परमशिव नृत्य प्रिय नृत्यम् अवधारय. तदित झोडुत धिमित किटतक झलंकुतक धिकुतक तधिंकिना तुम दाम दाम हिताम हिताम धरिकिटतक दे दे हिते हिते धरिकिटतक दाम दाम हिताम हिताम धरिकिटतक दे दे हिते हिते धरिकिटतक दाम दाम हिताम हिताम धरिकिटतक दे दे हिते Dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitam, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takati, Hitte, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, dedicate a Takadam, Hitan, Hitan, Takatiko dedicate a Tundam, Hitan, Hitan, Takatiko dedicate a Tundam, Hitan, Hitan, Takatiko dedicate a Tundam, Tadhitaka Jonudam, Tadhitaka Jonudam, Tadhitaka Jonudam, Takajodudam, Takajodudam. Gajananam Gajananam Gajananam
गणाधिसेवितुं गजाननं भूत गणाधिसेवितुं कपित जम्बूफलसार भक्षितुं उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं तद्धिन्दिन्नाद Wow, that was such a beautiful and amazing dance, which was offered to our beloved Swamiji, full of love and devotion. Each and every one of us sitting here right now are so blessed to have a living master, a living guru who is there to guide us. See, for each and every one of us today, remember,
Swamiji played this amazing, beautiful leela in his life to show each and every one of us that no pain, suffering, or adversity is too big in life that Guru's initiation cannot overcome. That is the power of initiation, and that is the blessing which we all have, that to have a living enlightened master amongst us. And as Swamiji says, in my life, I saw many times when the coin flipped, I'm not even looking at heads or tails. I just know why it rolls and how it is going to fall. All of that is in the hands of Mahakali and Kalabhairava, who are absolutely in love with me, protecting me and supporting me and manifesting through me. And that extreme sense of security, that settled feeling is initiation. And it is with the initiation of the Supreme Pontiff of Hinduism, of our beloved Swamiji, that we manifest all of these extraordinary shaktis. So let us now enter into the next seva, which we are going to be offering, which is the offering of the Shakti Avishkarana, the Paramashiva Shakti Avishkarana. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवान श्री नित्यानंद परमशिव शक्ति आविष्करण प्रिय परमशिव शक्ति आविष्करणम अवधारय. The power which we are going to be manifesting today is the power of consciousness over matter. So we have with us Manitya Virajananda here, a Balasant of the Nityananda Gurukul, who is going to be demonstrating and offering this extraordinary Shakti at the divine lotus feet of our beloved Swamiji. Before we start, let's listen to the Shastra Pramana, the scriptural reference for this power, which comes from the Vijnana Bhairava Tantra, Dharana 95, Sutra 120. क्वचिद् वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत्. Bhagavan Paramashiva so beautifully reveals, having fixed one's eyes on a particular object, one should slowly withdraw the sight from the object as well as slowly eliminate the knowledge of the object along with the thought and impressions of it. Then, O Devi, one abides in Shunya, the state where there is nothing other than this exists, which is the state of all-inclusiveness of infinity. Next, we are going to listen to the Apta Pramana. The Apta Pramana is the experience of the Rishis, Siddhas, Munis, all of those great beings, our ancestors, who manifested these extraordinary Shaktis as a part of their day-to-day life. So, once, on the special day of Thai Amavasya, in the temple, all of the devotees had come to the temple to have darshan. As usual, one of the great saints of Paramashiva, Abhirami Bhattar, was sitting in the temple and was doing his meditation. At that time, the king ruling the area, Sarboji, had also come to have darshan. Seeing that Abhirami Bhattar was not even aware that the king had come, the king became furious and asked him about which phase of the moon was it that day. Abhirama Bhattar was just in a deep meditative state and told the king that it was a full moon that day. The king then said, if the full moon does not rise today, you will be hung. Abhirami Bhattar then came out of a meditative state and he was shocked about what happened. He then told Devi Abhirami that she has to do something. He prayed to Devi Abhirami. He then set a pit with fire and sat above on a platform tied with 100 ropes and started singing the Andadi, the song of 100 verses. At the 79th verse, Devi herself graced him and threw her earring in the sky and it became a full moon. From that day onwards, the great saint was called Abhirami Bhattar. Such a beautiful story, such a beautiful Apta Pramana of how this great saint was able to be graced by Devi herself just through his pure state of devotion, how he reached out to Devi and how Devi herself threw her earring to
fulfill his words that it would be a full moon that day. Just like that, each and every one of us are also graced and blessed with the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism every day, how Swamiji initiates us into these extraordinary shaktis and graces us throughout our whole life. The next is the Apta Pramana. The Apta Pramana is Swamiji's own experience of how Swamiji manifested this power himself. One day, in Swamiji's own words, one day we both, Swamiji and his guru Arunagiri Yogeshwara, were sitting and talking, and he was telling and explaining the Yoga Sutra about how when you feel oneness with nature, nature listens to you. I said, how can that be? He asked me to feel one with the rock. I just contemplated and meditated on what I was feeling with that rock, a huge boulder. When I was in that ecstasy, Arunagiri Yogeshwara just moved my hand. He moved my hand, and I literally saw the whole boulder started rolling. I did not touch it. I did not do anything. There was no physical contact with the rock or the boulder. Just that feeling of one with the rock. When he moved my hand, the boulder started rolling. Then I started shouting, oh, what is happening? What happened? Stop. Then Arunagiri Yogeshwara stopped my hand and the boulder stopped. I think from that time only I started shaking people. This was the first object that responded to my movement, that responded to Swamiji's will. So beautifully, Swamiji sharing an experience of how when he was with Arunagiri Yogeshwara revealed the sutra to him. Swamiji simply connected to the boulder in front of him, felt oneness with the boulder in front of him, and as Arunagiri Yogeshwara moved his hand, the entire boulder started rolling. Such a beautiful experience, and all of you are going to be witnessing the Sakshi Pramana now of how Ma Viraja is going to be rolling this very coconut from my hand now. So as you all can see, I have a coconut with me. I'm going to be placing it on my palm. My palm will be completely straight and flat, and Ma Viraja is going to chant the Mahavakya. The Mahavakya is a mantra, the direct passcode to connect to Swamiji and feel oneness with this object, just like how Swamiji did, and roll the object off of my hand. And there is more to this power just than what you think. About how when you manifest this power, you are also breaking your root patterns and incompletions. Ma Viraja, would you like to go ahead and explain, Ma? Yes. So this power of consciousness over matter is nothing but to show all of us that we, what was happening in our life, we can actually move out of our will. For example, the matter, the coconut, is a matter, and you is a matter. It is pure. It is only through the consciousness. The coconut, the matter is even able to move. Same way, for example, my hand, my body. It is a matter. But because of the conscious, because of will which I want to move, it is moving according to my will. Same way, the patterns which you're having in your life, it is also a matter. Out of your will, out of your consciousness, you can simply move it. That's why Swamiji says the power of consciousness of matter can even help you to overcome any obstacles you have in your life, because your patterns is nothing but a pure matter. So Such a beautiful, wonderful explanation, Ma Viraja. And as Ma Viraja explained, just by manifesting this power of consciousness over matter, not only you can roll the coconut, you can also roll and shake and move all of your patterns and obstacles in your life also. How Swamiji so beautifully says, there is no pain or suffering in life. So now, without further delay, let's directly enter into the power manifestation. Ma Viraja is now going to be chanting the Mahavakya. As all of you can see, my hand is completely flat. I'm not going to be moving my hand at all, and the coconut will simply roll off just through willpower. So Ma Viraja, you can go ahead and start chanting the Mahavakya. Om Nityananda Paramashivoham
Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Yes. As all of you saw, the coconut simply rolled off my hand, and all of you can see that my hand was completely straight and that this power so beautifully manifested. And this was the offering which we wanted to offer at the Divine Lotus feet of our beloved Swamiji out of our love and gratitude to Swamiji. And with this, we come to the conclusion of this Uttamottama Seva. We thank each and every one of you who have tuned in with us. Thank you, Nityananda. देवता सार्वभौमम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकं श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवम् अष्टपुष्पैरभ्यर्च्य ओम ह्रीं नित्यानन्दासनाय नमः, ओम ह्रीं नित्यानन्दमूर्तये नमः, ओम ह्रीं नित्यानन्दाय नमः, ओम हां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे नमः, ओम हूं शिखायै नमः, ओम हैं कवचाय नमः, ओम हः अस्त्राय नमः। नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्तिरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव जय विजयी भव। आशीर्वचन प्रिय आशीर्वचनमवधारय। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सबला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्देभ्यः, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सदनाः सन्तु, जीवन्तु शरदः शतम्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजा सुचरिताः। पूजाधना सज्जनाः, षट्कर्म प्रवरा द्विजाः। प्रतिदिनं विद्या अनवद्या, सदा वाणी सन्निहिता। चिरं कविमुखैः आनन्दमव्याकुलाः। सर्वे सन्तु वैदिकधर्म अनुष्ठातारः, सौजन्यसन्तोषिणः। इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सबला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां सकलभूसृष्टिस्थितिसंहार तिरोभाव अनुग्रहाख्य पञ्चकृत्यपरायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेयपराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्रीनित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवस्वरूपाणां श्री आदिगुरु अरुणगिरियोगीश्वर स्वरूपाणां श्रीकालभैरव महाकालीस्वरूपाणां श्रीकैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमाण छत्र चामर श्रीजन्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राणजीमूत परमतकल भगेसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमत् ऋषभध्वज स्थापकान् शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनां अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनर्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानां कर्णगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानां कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानां नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्ताभिषिक्त चूड़ामणीनां साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वराणां
साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरुवरं पराप्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वराणां धर्ममुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानां कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणां श्री कैलास पुनरुद्धारकाणां श्री कैलास परमाचार्याणां श्रीमत् परमहंसानां परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानंद प्रणव स्वरूपाणां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां श्रीमज्जगद्गुरूणां श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामीनां परित्रविन्दयोः अचन्सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्यप्राप्तिः गुरुकृपाकटाक्षसिद्धिः धैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः अरोग दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः सर्वदेव देवी स्वरूपस्य भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवस्य पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्ति सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानंद ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानन्दम् शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलधात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् त्वं स्मृतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधर नामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम् हरिः ओम् तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानन्दम् I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasada Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. We thank all the participants and viewers to join us for today's Uttamottama Seva. Today's Uttamottama Seva was offered by
our own Shivaji and family, and Rekha Patak. And we invite all of you to join us for this grand celebration of Uttamottama Seva every day, where we will be offering the best of the best to our beloved Bhagwan, supreme point of Hindu. Bhagwan Shri Nityananda. So let us invoke the gratitude within us for all that Swamiji is showering on each of us. Thank you, Nityananda. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasada Om Nityananda Paramashivo